वालेकुम जी। तो आज हम MDCAT के कुछ पास्ट पेपर्स डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के पोर्शन के, और ये पास्ट पेपर 2010 के हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच वन इज़ द हाईएस्ट पावर मल्टीपल? ऑप्शन ए गीगा, ऑप्शन बी टेरा, ऑप्शन सी मेगा और ऑप्शन डी डेका। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका है ऑप्शन ए, गीगा इज द हाईएस्ट पावर मल्टीपल। सेकेंड क्वेश्चन, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 3, द इलेक्ट्रिकल एनालॉग ऑफ मास इज इलेक्ट्रिसिटी इज। तो ऑप्शन ए इसका हमारे पास कैपेसिटेंस है, ऑप्शन बी इंडक्टेंस, ऑप्शन सी चार्ज और ऑप्शन डी रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिकल एनालॉग ऑफ मास इज इलेक्ट्रिसिटी इज इंडक्टेंस। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इंडक्टेंस है। Question number 4. Which one of the following relation is correct? Option A, 1 Weber per meter square is equals to Newton per meter per ampere. Option B, 1 Tesla is equals to 10 causes. ये ऑप्शन बी में यहाँ पे मिसप्रिंटिंग हुई हुई है, इट 10 to power 4 causes होगा। ऑप्शन सी, 1 Weber meter per square is equals to 1 Tesla और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज है, क्योंकि ये सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लाइफ टाइम इलेक्ट्रॉन इन मेटास्टेबल स्टेट इज अबाउट 10 to power -5 सेकेंड, 10 to power -3 सेकेंड, 10 to power -8 सेकेंड और 10 to power -2 सेकेंड। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, 10 to power -3 सेकेंड। लाइफ टाइम इलेक्ट्रॉन इन मेटास्टेबल स्टेट इज अबाउट 10 to power -3 सेकेंड। Question number 6, the torque acting on the current carrying coil is given by। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर ए है, torque is equals to NIAB cos theta। Question number 7, the grid in the cathode ray oscilloscope is control number of wave, control the brightness of a spot form, accelerate electrons or has positive potential with respect to cathode। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, इट कंट्रोल्स द ब्राइटनेस ऑफ स्पॉट फॉर्म्ड। क्वेश्चन नंबर 8, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एट अ सर्टेन प्लेस इज कंप्लीटली डिटरमाइंड बाय। तो हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एट अ सर्टेन प्लेस इज कंप्लीटली डिटरमाइंड बाय एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। करेक्ट ऑप्शन इज ए, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्वेश्चन नंबर 9, इफ वेलोसिटी इज डबल देन। तो if velocity is double, then momentum is also double because velocity is directly proportional to momentum. So momentum will also be double. So momentum increases 2 times and kinetic energy increases 4 times. तो correct option हमारे पास इसका D है। Question number 10, the consumption of energy by 60 watt bulb in 2 seconds is। तो ये न्यूमेरिकल है, कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय 60 वाट बल्ब इन 2 सेकेंड इज। तो 60 वाट बल्ब की कंजप्शन 2 सेकेंड में पूछी गई है। 1 सेकेंड में बल्ब की कंजप्शन 60 वाट है, तो 2 सेकेंड में उसका डबल हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर हमारे पास आएगा 120 जूल। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 11, इन ट्रांजिस्टर द बेस रीजन इज वेरी थिन ऑफ द ऑर्डर ऑफ option A 10 to power -5 centimeter, option B 10 to power -6 meter, option C 10 to power -6 millimeter and option D 10 to power -6 micrometer। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन बी 10 to power -6 meter। Question number 12, the closed loop gain of OP AMP depend on। closed loop gain of OP AMP depends on। तो ऑप्शन ए इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ OP AMP, क्वेश्चन बी एक्सटर्नल कनेक्टेड रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी वोल्टेज ऑफ पावर सप्लाईज, ऑप्शन डी इनपुट रेजिस्टेंस। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास एक्सटर्नल कनेक्टेड रेजिस्टेंस है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 13, द नेट चार्ज ऑन एन टाइप सब्सटेंस इज। इसमें ऑप्शन ए 0.7 वोल्ट्स, ऑप्शन बी 0.3 वोल्ट्स, ऑप्शन सी 0.25 वोल्ट्स और ऑप्शन डी 0.07 वोल्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन
ए है 0.7 वॉल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 14, द वैल्यू ऑफ वीन्स कांस्टेंट इज। तो ये तो अंडरस्टूड सी वैल्यू है, इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 2.90 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -3 mK। Question number 15. The minimum frequency below which non-electron is emitted from the metal surface is called threshold frequency. Minimum frequency जहाँ पे आप वर्ड देखें below which non-electron is emitted from the metal surface is threshold frequency. Understood सा आंसर इसका। Question 7. Question number 16. In pair production, the type of photon used gamma radiations. पेयर प्रोडक्शन में हमारे पास गैमा रेडिएशन यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 17, the lifetime of an electron in an excited state is about 10 to power -8 second. What is its uncertainty in energy during this time? इसका क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन ए 0.05 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -41, ये करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी 1.05 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -26 जूल, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बी इसका ये करेक्ट है और बाकी सी एंड डी दोनों गलत है, जो कि 1.15 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 10 जूल और ऑप्शन डी 2.19 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -40 जूल। क्वेश्चन 18, velocity of electron moving in first orbit of hydrogen is option A 2.19 multiplied by 10 to the power 7 meter per second. Option B 2.18 multiplied by 10 to the power 7 meter per second. Option C 2.2 multiplied by 10 to the power 8 meter per second. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ए है 2.19 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 7। नहीं 7 नहीं होगा, ये 6 होगा। डी ऑप्शन डी यहाँ पे है 2.19 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन इसका करेक्ट डी है। क्वेश्चन 19, द लेजर इज अ पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 19, laser is a potential energy source of inducing which type of reaction? Option A radioactive, option B fission, option C ionization, option D fusion। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास डी है फ्यूजन। लेजर इज अ पोटेंशियल एनर्जी सोर्स फॉर इंड्यूसिंग फ्यूजन रिएक्शन। Question number 20, in the half-life of an element, the equation for the number of decaying atom is given by। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ए है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ये आप अंडरस्टूड सा है, आप सबने याद भी किया होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 20 का ए है। क्वेश्चन नंबर 21, डिके कांस्टेंट इज गिवन एज। डिके क्वेश्चन इज गिवन एज, दोबारा से रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन है। इसका भी करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ए है। डेल्टा एन डिवाइड बाय डेल्टा टी, तो इसका एक करेक्ट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 22, द SI यूनिट ऑफ ऑब्जर्वर्स डी दैट इज रेडिएशन इफेक्ट इज ग्रे एंड 1 ग्रे इज इक्वल टू। ये रेडिएशन लास्ट न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन है। 22 का SI यूनिट ऑफ ऑब्जर्वर्स डी दैट इज रेडिएशन इफेक्ट इज ग्रे, 1 ग्रे इज इक्वल्स टू, तो 1 ग्रे इज इक्वल्स टू जूल पर kg। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस डिटरमाइन। ऑप्शन ए ओनली वेरिएबल इन द इक्वेशन, ऑप्शन बी ओनली कांस्टेंट इन द इक्वेशन, ऑप्शन सी करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, ऑप्शन डी कांस्टेंट एंड वेरिएबल इन द इक्वेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन सी है, करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन determines correctness of an equation. Question 24, for a body to be in complete equilibrium, A linear acceleration is 0, B angular acceleration is 0, linear acceleration is 0 but angular acceleration is not 0, or option D linear acceleration and angular acceleration both should be 0। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास डी है,
linear acceleration and angular acceleration both should be 0. Question 25. If length of a spanner is L and force F is applied on it to tighten a nut such that it passes through the pivot point, then torque is option A 0, option B Ff, option C F1 sin theta, option C Fl sin theta, and option D Fl sin 0 lambda. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है 0. If length of a spanner is L and force F is applied on into tighten a nut such that it passes through the pivot point, then torque is 0. Question 26. If a force. Question 25 से बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़. स्टे ट्यून्ड.